Assalamualaikum, dear students. I hope all of you are fine, and I think all of you have prepared the chapter that we have discussed in the last video, that is nutrition in plants. And you have to prepare all the chapters that we will discuss here, and other subjects you also have to prepare. So today we are going to discuss about fiber to fabric, chapter number 3. Now let's first understand what are fibers. So fibers are very thin thread-like strands from which fabrics or cloths are made, like cotton, wool, silk, jute, nylon, etc. The fibers are spun into yarn which can be woven to make a fabric or cloth. अब फाइबर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पतले धागे जो होते हैं जिनसे हम क्लॉथ्स बनाते हैं. अब वो छोटे छोटे जो फाइबर्स हैं उनको क्या किया जाता है? दे आर स्पन बाय ट्विस्टिंग टुगेदर. They are spun into yarns which are long threads and which can be woven to make a fabric. कि छोटे छोटे जो धागे हैं उनको स्पन करके यार्न बनाया जाता है और जिससे हम फैब्रिक जो क्लॉथ्स हैं वो बनाते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, दैट इज नेचुरल फाइबर्स एंड मेन मेड आर सिंथेटिक फाइबर्स. सो नेचुरल फाइबर्स आर obtained from natural sources like plants and animals, and the synthetic fibers or man-made fibers that are derived from the chemical sources. So in the previous class you have learnt about some plant fibers like cotton and jute. So in this chapter we will study about animal fibers like wool and silk. I think you know from where we obtain the wool and silk, but in this chapter we will learn the process of obtaining the wool and silk, कि हमें कैसे wool और silk मिलता है. वो पूरे processes जो हैं वो इस chapter में हम discuss करेंगे. Wool is obtained from fleece or hair of some animals like sheep or yak, and silk fibers are obtained from the cocoons of the silk moth. So firstly we will discuss how wool is obtained from the sheep. So there are two types of fibers in sheep's hair. First is the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. So the fine soft under hair provide the fiber for making wool. अब sheep में दो तरह के hairs होते हैं, कुछ rough होते हैं और कुछ soft होते हैं जो कि skin के closer होते हैं. अब हम जो है wool किससे बनाते हैं? जो soft under hair होते हैं. अब इसके लिए क्या है? टू obtain the breeds of the sheep that possess only fine under hair, their parents are chosen. अब क्या है? कुछ ऐसे शीप्स होते हैं जिनमें सिर्फ सॉफ्ट हेयर्स ही होते हैं, तो अब उन शीप्स को सिलेक्ट किया जाता है for obtaining wool. So this process of selecting parents for obtaining special characters in their offsprings is known as selective breeding. There are several breeds of sheep found in different parts of our country and there are different sources of wool. अब हमारी कंट्री में different जो हैं breeds हैं sheep की और different sources हैं जिससे हमें wool मिलता है. Like York wool is common in Tibet and Ladakh, and Angora wool is obtained from Angora goat in hilly regions of J&K, and also the fur on the body of camel is used as wool. And llama and alpaca found in South America are also yielding wool. Llama and alpaca, these are long-haired domesticated animals found in South America. अब मोस्टली जो है वूल हमें शीप से ही मिलता है. सो फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड एंड ब्रेड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल. तो अब वूल ऑब्टेन करने के लिए हम शीप्स को पालते हैं, उनके हेयर जो हैं वो कट करते हैं, देन they are drawn into wool. So rearing of sheep means to look after the sheep by providing them food, shelter and health care. And so breeding of sheep is done to obtain breeds of sheep which yield good quality of wool in large quantities. अब जो शेफर्ड्स होते हैं वो शीप्स को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको अच्छे से खाना देते हैं, किस लिए? कि उनको अच्छी क्वालिटी की, जो गुड क्वालिटी की वूल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिल सके. एंड द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप इज shearing. It is the process of removing the fleece of the sheep along with a thin layer of its skin. Shearing does not hurt the sheep because the uppermost layer of the skin of sheep is dead, and this process is done in hot weather so that sheep can survive without protective coat of the head. अब फर्स्ट प्रोसेस जो है, फर्स्ट स्टेप, डेट इज़ शेयरिंग. इसमें क्या होता है कि शीप के हेयर रिमूव किए जाते हैं. अब ये प्रोसेस जो होता है कब होता है? ड्यूरिंग हॉट वेदर. क्यों? क्योंकि अब शीप के जो
फर होती है, उसके हेयर जो होते हैं वो उसको सर्दी से भी बचाते हैं। तो ड्यूरिंग हॉट वेदर जब उसके हेयर्स रिमूव करेंगे तो उसको सर्दी फील नहीं होगी। एंड ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। अब जिस तरह से आपके बाल जो हैं दोबारा से ग्रो करते हैं, तो इसी तरह से शीप के हेयर भी दोबारा आ जाते हैं। So next step is scouring. In this process, the sheared skin with hair is washed to remove grease, dust and dirt, and it is done by machines. अब second step क्या है? Scouring. अब जिसमें क्या होता है कि जो उसकी the sheared skin with hair की जो उसके hair remove किए होते हैं along with the thin layer of skin that is washed, कि उसको धोया जाता है to remove the grease, dust and dirt, कि जो भी उसमें dust वगैरह होगी वो remove हो जाती है। And this process is done by the machines. The next step is sorting. It is the process of separating the hair of the sheep according to their textures. अब next step क्या है? Sorting, जिसमें अलग अलग textures, जैसे कि कुछ rough होंगे, कुछ सॉफ्ट होंगे, कुछ डिफरेंट कलर्स के होंगे, तो उनको सेपरेट किया जाता है। देन द सेम क्वालिटी ऑफ वूल इज मिक्स टुगेदर, तो फिर जो सेम क्वालिटी की वूल होगी उसको इकट्ठा रखा जाता है। Then the next step is removing of burrs. In this step, the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hairs, and then the hair is cleaned and dried out. So after that, the wool obtained is ready to be drawn into fibers. अब इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको पिकअप किया जाता है और उसके बाद फिर से वो जो हेयर्स होते हैं उनको धो के सुखाया जाता है। अब जो हमें वूल मिलेगी डेट इज़ रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। Then the fifth step is coloring of wool fibers. So on this step fibers are dyed into different colors. तो इसमें क्या होता है कि fibers को हम different colors में dye करते हैं। So the next step is rolling of wool. So in this step the fibers are straightened, combed and rolled into yarn. तो इसमें जो फाइबर्स हैं उनको सीधा करके रोल किया जाता है yarns, and the long fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloths. और जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं वो स्वेटर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो स्मॉल फाइबर्स होते हैं डेट आर यूज फॉर वूलन क्लॉथ्स। फाइनली वी कंक्लूड दैट देयर आर 6 steps involved in processing of fibers into wool. So first step is shearing, in which the hair of the sheep are removed. The second is scouring, in which the hair is washed to remove the dust and dirt. The third is sorting, in which the different textures, the hairs of different textures are separated. And the fourth is removing of burrs, in which the small fibers called burrs are removed. The fifth one is coloring of wool fibers, in which the fibers are dyed into different colors. And the last and the sixth step is rolling of wool, in which the fibers are straightened and rolled into yarn, and then they are used for knitting sweaters and for weaving cloths. One more thing we will discuss today, that is occupational hazard. That means risk of a particular occupation. As the wool industry is an important source of livelihood for many people in our country, and the people who do the job of sorting, means the separating the fleece of the sheep into fibers, are called sorters. अब वो लोग जो ये job करते हैं for sorting the different textures, the fibers of the different textures, they are called the sorters. And the sorters job is very risky because sometimes they get infected by the bacteria called anthrax, which cause a deadly blood disease called sorter disease. क्योंकि अब sorters job जो है वो बहुत ही रिस्की है, उनको बहुत खतरा होता है, क्योंकि कभी कभी बैक्टीरिया जो है एंथ्रैक्स जो है डेट कॉज अ डिजीज डेट इज कॉल्ड द sorters disease. And the risk faced by people working in any industry due to the nature of their work are called occupational hazard. This is all about today. Inshallah, in the next class we will discuss about the process of obtaining silk, and before the next class you have to prepare this topic, and also you have to keep a separate science notebook for writing the question answers that are given to you, and that will be checked after the reopening of school. Thanks and all the best.